श्रीविष्णुद्वादशाक्षरस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। ध्यानम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यम् वन्दे सद्मन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यम् वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्ति भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत्। नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रशङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णं मन्तर्हत्कमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपां ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार मंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयेश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय। गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वताय
तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशे विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपदमनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारिणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजश्वा स्तुन्वन्ति त्यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। श्रीगणेशाय नमः। ध्यानम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यं वन्दे सद्मन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यं वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्ति भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत्ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मं धरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं
तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रशङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्मं मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णं मन्तर्हत्कमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपां ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार मंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयेश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपदमनिष्टशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारिणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय
तस्मै नमो भगवते परमामृताय। वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजश्वा स्तुन्वन्ति त्यं सततमेव समस्तवेदाः। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। यस्याक्षरस्य निरवध्य निरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा। तस्मै नमो भगवते परमामृताय। द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने। द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति। सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। श्रीगणेशाय नमः। ध्यानम्। वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम्। वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यम्। वन्दे सद्मन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यम्। वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यम्। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते। ध्रुवो बीजं च हृच्छक्ति भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्तये। कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत् ततः। पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः। रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत्। नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं। शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं। तुलसीदलसंयुक्तं वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम्। असंख्यचन्द्रशङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनं। कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम्। अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं। मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं। कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं। तुलसीमालया पद्मं मालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णं मन्तर्हत्कमले स्थितं। ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं। राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं। जपां ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः। तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार मंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयेश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय
तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेवनिकरैश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय तेषां हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपदमनिष्टशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारिणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजश्वा स्तुन्वन्ति त्यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्। श्रीगणेशाय नमः। ध्यानम् वन्दे चिन्मात्रमेकाक्षरमजममरं पूर्णमानन्दमात्रम् वन्दे सद्ब्रह्मरूपं हरविधिविबुधैर्ध्यायमानं सुपूज्यं
वन्दे सद्मन्त्रबीजं ऋषिगणनिकरैः स्तूयमानं च दिव्यम् वन्दे संसारसारं सकलगुणनिधिं वासुदेवं वरेण्यं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य ऋषिः प्रजापतिः स्मृतः देवता वासुदेवश्च गायत्री छन्द उच्यते ध्रुवो बीजं च हृच्छक्ति भुक्तिमुक्त्योश्च प्राप्तये कृत्वैवं विनियोगं च प्राणायामं चरेत् ततः पूरके षोडशावृत्त्या कुम्भके द्वादश स्मृतः रेचके तु दशावृत्त्या प्राणायामविधिं चरेत् नासाग्रे लोचन कृत्वा मध्ये हृदकमले स्थितं ध्यायेन्नारायणं देवं व्यापकं ब्रह्मरूपिणं शङ्खचक्रगदापद्मधरं नीलं चतुर्भुजं पीताम्बरधरं देवं विष्णुं कमललोचनं तुलसीदलसंयुक्ता वनमाला सुशोभितं सुवर्णमुकुटं रम्यं दिव्यकुण्डलभूषितम् असंख्यचन्द्रशङ्काश साक्षात् ब्रह्म सनातनं कैवल्यमोक्षदं सत्य रूपं विश्वात्मकं विभुम् अथवा राधिकानाथं द्विभुजं मुरलीधरम् आजानुबाहुकं दिव्य वदनं श्यामसुन्दरं मणिमन्मुकुटं तद्वत् कुण्डलं पीतवाससं कस्तूरीतिलकं यस्य ललाटे सर्वमोहनं तुलसीमालया पद्ममालया मणिमालया शोभितं शान्तिदं कृष्णं मन्तर्हत्कमले स्थितं ध्यात्वैवं पुरुषं पूर्णं वासुदेवं सनातनं राजमन्त्रजपं कुर्यात् द्वादशाक्षरनामकं जपां ते श्रद्धया युक्तः पाठं कुर्यात् प्रयत्नतः तं दृष्ट्वा भक्तिसंसक्तो वासुदेवः प्रसीदति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओंकार मंत्रमय पूज्य सदक्षराय पादत्रयाक्षरमयाय त्रयेश्वराय वेदत्रयाय त्रिगुणात्मत्रिदेवताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय नम्याय सर्वजनहृतकमलस्थिताय चाङ्गुष्ठमात्रपुरुषाय विभुत्वगाय ज्योतिर्मयाय तिमिरान्तकनिर्मलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय मोक्षप्रदाय सुखदाय धनप्रदाय ज्ञानप्रदाय सततं परमोज्ज्वलाय ब्रह्मादिदेव निकरश्च सुपूजिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय भक्तस्य दुःखदलनाय च रक्षकाय धर्मस्य सन्ततमधर्मविनाशकाय नानावतार पृथिवीतलधारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय गव्यप्रियाय सकलेप्सितसम्प्रदाय सत्यप्रवृद्धिकरणाय सुमङ्गलाय कृष्णावतार करुणालय सद्वताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वन्द्याय सर्वजगतां सुरसत्तमाय वंशी विभूषितकराय मनोहराय नानाप्रपञ्चविलयोदयकारणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय
तेषां हि दुष्टशिशुपालककंसकेशी कालीयकालयवनादिखलेश्वराणां मानं विमर्द्य जगति तलरक्षणाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वासांसि यस्य सकलानि तडिन्निभानि रूपं नवीनघनसन्निभमाद्यवर्णं नारायणाय नररूपविभूषिताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय सुन्दोपसुन्ददलनाय सुदर्शनाय वृतपदमनिष्ठशुभविग्रहशोभिताय सद्ब्रह्मचिद्घनपरात्परकेवलाय तस्मै नमो भगवते परमामृताय देवाय भक्तभवसागरतारिणाय दुर्दन्तवक्रशिशुपालककर्दनाय लीलार्थमेव जगति तलमागताय तस्मै नमो भगवते परमामृताय वायुस्तथैव वरुणोऽग्निशशाङ्करुद्रा इन्द्राश्विनी सुतकुबेरयमा अजश्वा स्तुन्वन्ति त्यं सततमेव समस्तवेदाः तस्मै नमो भगवते परमामृताय यस्याक्षरस्य निरवध्यनिरञ्जनस्य संसारदुःखरहितस्य सुदुर्लभस्य जानन्ति नैव महिमानमशेषजीवा तस्मै नमो भगवते परमामृताय द्वादशाक्षरनामाख्यं स्तोत्रं यद्रचितं मया समर्पयामि देवाय कृष्णाय परमात्मने द्वादशाक्षरसंयुक्तं स्तोत्रं सर्वोत्तमं शिवं यः पठेत् प्रातरुत्थाय ज्ञानं सद्यः स विन्दति सदा सद्भक्तिभावेन ध्यात्वा हरिपदामृतं पाठमात्रेण सद्भक्तो गच्छेद्धि हरिमन्दिरम्।